बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कई सारी गलतियां करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, समवन आस्क्स यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और गिव मी योर इंट्रोडक्शन। तो आप क्या बोलते हैं? आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम माई सेल्फ। तो अगर आप भी ये सारी गलतियां करते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम आपकी हेल्प करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Greet. Well, greet is a part of your introduction. In greetings, you can also say something like this. Good morning if it is morning time, okay? If it is afternoon time, you can use good afternoon, sir or madam. Or if it is evening time, you can use good evening, sir. Up to 8 p.m. you can use good evening, okay? Beyond 8 p.m. you can use good night, sir or madam. So this is the first step you have to focus on while introducing yourself. अगर आप introduction देते हैं and it's an informal introduction, then you can also use hey, hello, what's up? But if you are in front of a job interviewer or in front of an employer, you must use formal way of greeting. And I taught you how to introduce yourself in a formal way. It seems more polite. क्या आपको मालूम है first impression is the last impression? It is said that you will never get the second chance to make first impression. So you have to be prepared to introduce yourself. Doesn't matter if you are introducing yourself in a classroom or in front of an employer or in front of an audience, you must be prepared for that. Is it clear? Well, there are so many ways of introducing oneself. Okay, you can say, I am Khurshid Ahmad Lone. I come from blah blah blah. I come from Srinagar. If there is a distance between the place where you are interviewed and the place you actually live in, okay, so then you can use I come from. Myself, blah blah blah. So it is said that using myself in introduction is grammatically incorrect. So why not use other options? Because you have lots of options. You can use my name is Khurshid Ahmad Lone. Your name is Khurshid Ahmad Lone, basically it's my name. तो आप इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. My name is Khurshid Ahmad Lone. I am from Gandhaba. I have done masters in English and B.Ed, Bachelor of Education. And if you are studying in 10th class, you can say I study in 10th standard, or I study in 6th standard, or I am in class 6, or I am in class 7, I am in class 10, okay, not 10th but 10. Sounds good? आपको मालूम है रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट से पूछा व्हाट इज योर नेम एंड ही आंसर्ड खुर्शीद सर. मैंने सोचा शायद इसने मेरी आवाज को सही से नहीं सुना. मैंने थोड़ा सा और जोर लगाया, दम लगाया और पूछा व्हाट इज योर नेम. तो उसने भी वहां से दम लगाया और बोला खुर्शीद सर. तो मैं बोला बच्चा, मैं मेरा नाम नहीं पूछ रहा हूं, आप अपना नाम बताइए. Then he mentioned his name properly. So what I am saying that making mistakes is not a sin, but repeating the same mistake again and again, it's blunder. And you can also mention about your family if he or she asks you about your family. Okay, अगर उसने पूछा आपकी फैमिली के बारे में तो आपको बताना चाहिए. Okay, so you can say apart from my parents, we are 4 siblings or 3 siblings. और 2 siblings. ठीक है, यानी मेरे पेरेंट्स के अलावा, मेरे वालिदैन के अलावा हम 4 भाई बहन हैं या 4 भाई, whatever. Okay, and just remember one thing, you need not to tell everything about yourself or about your family. आपको सब कुछ नहीं बताना है अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने सीक्रेट्स नहीं बताने. So the things that matter the most, you have to present them. Okay? जो ज्यादा जरूरी है चीजें वो आपको उनके सामने पेश करनी है. और कोई आप में से सोच रहा होगा कि मुझे सब कुछ बताना है अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में, कि मेरे पास 2 भैंसे हैं या 4 मुर्गे हैं. तो ये सब कुछ नहीं बताना है.
ऊपर ऊपर से, superficially, okay? सब कुछ नहीं बताना है. And if you are pursuing higher education, you can say I'm pursuing M.Ed or M.Phil or B.Tech. Pursuing का मतलब है ताक़ुब करना, किसी चीज को या डिग्री को हासिल करने के लिए काम करना, to seek, okay? And now important point, if you are applying for a job, you must mention additional skills, okay? For an example, if you have done 6 months course, basic course in computer, you can say I have done 6 months basic computer course, or I have done O-level computer course. So it gives a weightage to your resume. Basically, the employer wants the most efficient or the best employee for his or her company. So why don't you show yourself as the most efficient and best employee for that particular kind of job or company? Sounds good? अब हम बात करते हैं हॉबी के बारे में. So it is also acceptable if you also mention your hobby in the introduction. Okay? So if there is a time and situation, you must go for it. For an example, I can say I like playing cricket. Okay? Why cricket? Because cricket is my hobby, and you can mention your hobby. If you are a football player, you can say that I like playing football, I like playing badminton, okay? Whatever hobby you are pursuing or having, you can mention easily. Got it? So you can also mention that I like to read books or self-help books, okay? And you can also mention cooking as your hobby, or you can say I like swimming, whatever it is, okay? Doesn't matter. अगर आपके पास तजुर्बा है तो ये बहुत ज़रूरी है आप अपने तजुर्बे के बारे में उनको बोलें. You must have some kind of experience. For an example, I can say that I have 2 years of experience in cooking. मुझे पकाने में 2 साल का तजुर्बा है. और I have 5 years of experience in playing cricket. Or I have 10 years of experience in playing football. Or I have 15 years of experience in teaching students. Sounds good? आप बोलेंगे सर हम तो स्टूडेंट हैं, अभी हमारे पास कोई एडिशनल स्किल नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? You can say simply I'm a fresher. Okay, if you don't have any skills or experience here. आप ये सोचिए कि जो एम्प्लॉयर है वो क्या चाहता है. वो यही चाहता है कि सबसे बेस्ट स्टूडेंट या एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए या जॉब के लिए वो सिलेक्ट करें. और आप इसीलिए अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारी चीजें बता रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ब्ला ब्ला ब्ला, टू इम्प्रेस हिम. उसको ये बोलने के लिए कि वाकई अगर आप हमें जॉब पे रखते हैं, I am certainly the best employee for your company to make you more profitable. तो इसीलिए तो आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, और इसीलिए एम्प्लॉयर बेस्ट स्टूडेंट को चूज करता है ताकि जिस स्टूडेंट को वो चूज करे उससे उस कंपनी का या उसे फायदा हो. तो बिना फायदे के nobody will select you, because आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो because you also have some kind of benefit intention in your mind. That's why you are applying for the job. Okay, if there is no benefit or monetary benefit, you won't be applying for the job. As per research and data, whenever an employee gets a job, it is because of the 80% of his attitude and only 20% of his skills or expertise or knowledge. यानी आपका रवैया कैसा है तो 80% इस पे डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको जॉब के लिए सिलेक्ट करता है या नहीं करता है. सिर्फ 20% आपके स्किल्स वो देखता है, मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नॉलेज है, वो सिर्फ 20% देखता है. बाकी 80% आपका रवैया कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है. नाउ इफ समवन आस्क्स मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, हाउ शैल आई स्टार्ट? I shall start like this. Good morning, sir or madam.
Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Khurshid Ahmad Loan. I am from Gandabal. I have done post-graduation in English in the year 2017 from Indira Gandhi National Open University. And I've also completed my B.Ed course. Right now I am pursuing M.Ed. In addition to this, I have 15 years of experience in teaching students. Would you be interested if I tell you about my hobby? Yes, sure, go ahead. Well, I like to play cricket in my leisure time because sports keep us mentally as well as physically fit. That's why I'm a quick-witted student. That's why I'm suitable for this job. अगर आप अपनी इंग्लिश को और बेटर बनाना चाहते हैं और ज़्यादा इंग्लिश वीडियोस आप देखना चाहते हैं, then subscribe this channel now.